Students, today we are going to discuss your worksheet number 55, class 9th for the date 11th November. So let's start today's worksheet. Today we are starting a new chapter which is known as gravitational, universal law of gravitation. So Gyan is asking what is gravitational force and what is its importance. So on observing that a ripened apple falls from on the earth, Newton deducted that earth attracts every object towards itself by a force. Moon, which revolves around the earth continuously, experiences similar centripetal force. This is the picture of Newton. But they never collide. Similarly, all planets revolve around the sun. On the basis of these facts, Newton concluded that the objects in the universe attract each other, and this force of attraction between objects is known as gravitational force. दो अलग अलग चीज़ों के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसके हिसाब से उसको ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दिया गया है, और इसको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स विच इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. ये जैसे हमारे दो ऑब्जेक्ट हो गए, तो एक दूसरे से जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, दैट मीन्स m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. दोनों के बीच की दूरी है उसको हमने d2 कर दिया, तो हमारे पास आ गया m1 into m2 upon d2. Or as per the universal law of gravitation, the force F between them is directly proportional and inversely. So this is the 2 points. So we have come that F is proportional m small m d2. So this G is there. G is actually the proportionally constant and it is called the universal gravitational constant. और इसकी जो वैल्यू है वो फिक्स कर दी गई है 6.6 into 10⁻⁻11. तो ये आपको याद रखना है. What is the different importance of universal law? This force that bind us to the earth. हम जो धरती से जुड़े हुए हैं because of this force. जो मून हमारे चक्कर लगा रहा है, the moon, motion of the moon around the earth, the motion of the planets around the sun, the tides in the sea, flow of water in the river and rainfall. All are these the importance of universal law of gravitation. Let's see the question answers. First is write universal law of gravitation. Every object in the universe attract every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. आप इसमें फॉर्मूला भी लिख सकते हैं जो आपका F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d2, ये भी लिख सकते हो साथ में. What is the importance of universal law of gravitation? The force that binds us to the earth, the motion of the moon to around the earth, the motion of the planet around the sun, the tides, flow of water in river and for rainfall. तो आप इनमें से कोई भी 3 या 4 पॉइंट लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन इफ देयर वाज नो ग्रेविटेशनल फोर्स? राइट व्यूज. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी तो क्या होगा? देन यू कैन से द एटमॉस्फेयर वुड वैनिश इनटू स्पेस. जो हवा है हमारे एटमॉस्फेयर में जो पकड़ के रखी हुई है ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो सब खत्म हो जाएगी. मून जो है अर्थ में आके मर्ज कर जाएगा. अर्थ जो है इट विल स्टार्ट स्पिनिंग. We all would feel weightless. हमें अपना वजन का पता ही नहीं चलेगा. Earth would collide with sun and सब मर जाएंगे. What does G denotes in the equation? G is the proportionality constant and it is called the universal gravitational constant. Value 6.6 into 10 raised to power minus 11. It is 6.6 to 10 raised to power minus 11. Okay? यहाँ पे आया नहीं, इसको ठीक कर लेना. That equation is Newton meter per kg. So this completes your worksheet. Hope you like this worksheet. Thanks for watching. Do subscribe the channel. Thank you.